Hi friends, welcome back to Hang On Studies. Today we are going to start the third poem of class 11th English Maharashtra board, which is There is Another Sky. So जो आइस ब्रेकर है you can do it very easily क्योंकि इसमें बस you have to write happy moments and sad moments, then some phrases which you can easily get in some books from your teachers, and if you don't, so please approach towards me by giving a comment. And ये वाला एक जो phrase है इसे याद रखना. Every cloud has a silver lining. You can also make it every dark cloud has a silver lining. ठीक है, I will use it ahead. Okay, then you have to write some like यहाँ पे I guess uses लिखने. सन से क्या क्या होता है, we get solar energy, then commitment, many things, also some colors associated facts you have to write. Okay, so nothing much, so let us start the introduction of the poet of this poem. There is Another Sky. This poem is written by Emily Dickinson, who is an American poet of 19th century. She lived a lonely life. Most of her poems are motivational and philosophical. They are unique to her era and are characterized by simple and short lines. She often used slant rhymes and conventional capitalization and punctuation. Her poems are the psalms and hymns of life in all its shades. So Emily Dickinson जो है एक अमेरिकन पोएट है 19th century में जो रहती थी, like in 19th century में उनके ज़्यादा poems आई थी and she was alive also at that time. Then she lived whole life lonely, and most of her poems are like motivational, philosophical, like she was living lonely, so for sure she have to motivate herself somehow to manage to like लोगों से बात करने के लिए खुद को मोटिवेटेड रखना जरूरी हो गया था उसके लिए. That's why she used to write more on motivational and philosophical poems. She has made an unique era because of her some short line poems. She used to write very short poem. This poem is too short, उसका भी एक reason है which I'll tell you ahead. Then she used like slant rhymes and conventional capitalization and punctuation. She used to use many rhythms and unconventional capitalization punctuation in her poems. That's why it was more attractive. And also she wrote the poems mainly on the shades of life में जो जो होता है उसके बारे में इन्होंने पोम लिखी है. किसने? एमिली डिकिंसन ने. तो अब जानते हैं पोएम के बारे में. इंट्रोडक्शन. देयर इज अनदर स्काई इज एन इंस्पिरेशनल पोम विद अ मैसेज ऑफ नेवर से डाई. इट इज अ Petrarchan sonnet with octave and sestet. The poem is communicating to her brother through a letter. Sorry, the poet is communicating to her brother through a letter. She encourages her brother not to get depressed under any circumstances and pleads with him to return home. Life is full of challenges. One can tackle the challenges with a positive attitude. The poem ends on an optimistic note. The brighter garden stands for choices that life offers to all. तो जो पोम है वो एक इंस्पिरेशनल पोम है जिसमें हमें एक मैसेज मिलता है. नेवर सेड आए. कब लाइक नेवर सेड आए इसलिए कहा, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, हमने गिव अप नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज अप्रोच टू इट. हमें हमेशा आगे डट कर उसका सामना करना चाहिए और उसके लिए एक सोल्यूशन लाकर उसे उस प्रॉब्लम को मिटा देना चाहिए, ना कि कहना चाहिए लाइक आई कैन डू एनीथिंग एंड रेज योर हैंड्स अप. और बहुत बार हम सुनते हैं ना बूढ़े लोगों से कि आज मेरा आखिरी दिन क्यों नहीं है एंड ऑल. सो ऐसा कहने के बजाय यू शुड बी मोर मोटिवेटेड, लाइक you should change your day ऐसा. So now what is the word Petrarchan sonnet with octave and sestet means? Petrarchan sonnet means जो 14 लाइन की पोम्स होती है मेजरली उन्हें Petrarchan sonnet कहा जाता है. And octave and sestet means first paragraph contains 8 lines and second contains 6 lines. And this poem is written by poet. like पोम लिखने के पीछे हर बार कुछ ना कुछ रीजन होता है. And this poem was written by poet Emily Dickinson for like to motivate his brother whose name is Austin, which we'll see ahead in the poem, and says like don't get depressed, life is full of challenges. समझाती है उसे कि लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आए you should never give up and all. एंड आखिरी में एक बहुत अच्छे नोट के साथ एंड होती है पोम जिस द ब्राइटर गार्डन. यानी लाइफ हमें बहुत सारे ऑफर्स देती है, चॉइसेस देती है. उतार चढ़ाव लाइफ में नहीं होंगे तो life is none of use, because if you will see cardiograph also, so lines are up and down, up and down. You can relate it like लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती है, वी हैव हैप्पीनेस ऑल्सो, एंड डाउन मीन्स लाइक दुख आता है, प्रॉब्लम्स आती है, और ये सब है तभी लाइफ है. अगर ये सब बंद हो जाए, लाइन सीधी हो जाए, तो यू ऑल नो व्हाट हैपेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम. देयर इज अनदर स्काई एवर सेरीन एंड फेयर. देयर इज अनदर स्काई मीन्स एक ही जगह नहीं है जहाँ पर तुम डिप्रेस्ड हो, आगे भी जगह है. जस्ट वॉक अवे, जस्ट गिव अप, नॉट गिव अप, जस्ट मूव ऑन. Okay, never give up and move on. Okay, and ever serene and fair, which is very peaceful and good. And there is another sunshine, though it be darkness there. आगे sunshine भी है, भले ही अभी darkness है, अभी भले ही मुश्किल है पर आगे रास्ता भी है. Never mind faded forests, Austin. Never mind silent fields. So a poet, एमिली क्या कहती है ऑस्टिन को? ऑस्टिन कौन है? एमिली का यंगर ब्रदर है. So what she says to him कि never mind faded forests. Faded forests यानी जो
जंगल खराब हो गए हैं, लाइक उनको कभी माइंड मत करो, या यू कैन ऑल्सो टेक इट एज बुरी चीज़ों को, या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, या कुछ रुकावटें आती है कोई चीज़ों में, या लाइक यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, तो डोंट टेक इट, लाइक डोंट माइंड इट, लीव इट, जस्ट लीव इट, find solution on it. Never mind silent fields, she says. Okay, and then here is a little forest whose leaf is evergreen. ये देखो, ये छोटा सा फॉरेस्ट है जिसकी लीफ हमेशा एवरग्रीन है. Here is a brighter garden where is not a frost has been. अब वो क्या बोलती है कि यहाँ पे एक ब्राइटर गार्डन है जहाँ पे आज तक फ्रोस्ट नहीं हुआ. फ्रोस्ट यानी जब लीव्स पर आइस आ जाती है. यू कैन सी हियर लाइक व्हेन टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड थिन लेयर ऑफ आइस फॉर्म्स ऑन द ग्राउंड एंड अदर सर्फेसेस. अदर सर्फेसेस यानी अब यहाँ पे गार्डन और फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो यू कैन टेक इट एज ट्रीज. ओके, देन इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइट बी हम. अब उस फॉरेस्ट के, उस गार्डन के जो लाइक सेकंड वाला जो वो बोल रही है, इज अ ब्राइटर गार्डन, वहाँ के जो फ्लावर्स है वो अनफेडिंग है. अनफेडिंग यानी अलग अलग कलर के रंग बिरंगी फ्लावर्स जो है उनके ऊपर जब बी यानी मधुमक्खी जब लाइक हमिंग साउंड करती है लाइक दैट, तो स्टार्ट हियरिंग इट, ऐसा बोलते हैं, लाइक शी इज हियरिंग इट. प्रीति माई ब्रदर. प्रीति इज अ ओल्ड लाइक Priti, here it is given a nickname of her brother Austin. Also, it can be taken as because Priti. This word was used in like you can tell history. Like पहले English में Priti used to mean please, please my brother. You can take like that also, or my brother directly into my garden. My brother come into my garden. ऐसा उसे कहना है. जो वो सोच रहा है लाइक मोटिवेटेड नहीं है वो, ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड, अनफेडेड सॉरी फेडेड फॉरेस्ट्स के बारे में सोच रहा है, तो शी सेज कि कम इनटू माय फॉरेस्ट. यू कैन सी द वर्ड्स व्हिच आर लाइक, यहाँ पे फेडेड फॉरेस्ट का है, यहाँ पे अनफेडिंग फ्लावर्स का है, यहाँ पे साइलेंट फील्ड्स का है, यहाँ पे ब्राइट बी हम का है, नेवर फ्रोस्ट ऐसा का है. तो दे आर कॉन्ट्रास्टिंग इट एंड टेलिंग, पोएट इज ट्राइंग टू टेल हिज हर ब्रदर कि बी मोटिवेटेड, बी इंस्पिरेशनल, नेवर गिव अप. Okay, like that, because life gives everyone chances. So this poem is written by Emily Dickinson. So the conclusion of this poem actually means कि लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, we should never give up. We should always try to come up with ideas and solutions towards it, and never say die, which is the first or the foremost. You can take it as इस poem का सार ही यही था. Moral of this poem is never say die. Okay, so here we are done with the poem, and if you have any doubts or any queries, so please let me know in the comment section. And if you have liked my explanation of this poem, so please like my video and share it with your friends, and also subscribe my channel for getting the new videos on class 11th studies. Thank you.